अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हैंड्स ऑन होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, एंड दैट आल्सो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। ऑफिस वर्ड ओके। एज यू कैन सी अभी मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है ऑफिस 2019 भी है एंड आल्सो वर्ड 2007 बिकॉज वर्ड 2007 एडिशन जो वर्जन जो माइक्रोसॉफ्ट का था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, दैट वाज अ बिग रिवीजन। बड़े फीचर्स आए थे उस वक्त। सो अभी भी ये फीचर्स परवेसिव है, अभी भी ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्जन परवेसिव है। ठीक, अच्छे खासी फीचर्स थे इसमें जो अभी भी है। सो विल बी यूजिंग वर्ड 2007 फॉर आवर डेमोन्स्ट्रेशन। ओके, now because this is a hands-on video only, so I suggest you to go through the content that I have already provided to you. In this video, I won't be going in details of theoretical details. So overall, Microsoft Word is an application software, is a word processor, is a word editor that you know. Now here in hands-on, without going in details, we'll simply do the practical part here. Okay, so let's start. Okay, now see, first of all, let us get in some text. How? Using rand function. For you can simply type the text. Type some text, example application, anything. It can be anything. Now, for demonstration purpose, I'm not typing the text. I'm simply generating some random text using what? A function called rand function. This is the random text. Now, using this base text, we'll do some formatting jobs on this formatting process. Now, first of all, in Word, if you want to highlight something, simply place the mouse cursor there and select the portion. If you want to select all the text inside your page, Control A. If you want to do some copy paste, Control C and Control V for paste. You can do from here as well. Okay, like this. यहाँ पर भी कर सकते हैं लाइक कॉपी और पेस्ट। ठीक है, अगर कट करना हो कोई पोर्शन, लाइक दिस, select that portion, Control X is cut, but the cut part is available for pasting. Control V, paste. अभी आई assume कि जो मेरी टारगेट ऑडियंस है, जैसे इनकम फॉर सम स्टूडेंट्स, तो मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है पिछले कई एकेडमिक सेशंस में कि आप जो हो वो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज तो होता ही होता है,
तो दैट्स वाई मतलब यहाँ पर मैं एज्यूम करता हूँ कि जो आज का जो सेमेस्टर होगा, आज का जो बैच होगा, इंशाल्लाह वो भी बेसिक थोड़ा सा कंप्यूटर ना हो ही का they must be they will be having it as well इंशाल्लाह। सो इसीलिए मैंने स्टार्ट किया है डायरेक्ट इससे फॉर्मेटिंग फंक्शन से टाइपिंग। आई होप यू नो, यू आर सपोज टू नो। इफ यू डोंट नो यू कैन यूज any typing tutor software to improve your typing speed. Now वर्ड की हम बात कर रहे हैं, वर्ड प्रोसेसर की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये वर्ड एप्लीकेशन हम ओपन करके रखिए। अगर अभी के लिए मैं चाहूँ इस डॉक्यूमेंट को सेव करूँ तो आई विल प्रेस कंट्रोल एस। फाइल नेम is suggest on the insert tab because the first sentence, the first letters of this word are these one. You can rename it first file. Okay, save as what? Word document. And file computer has got an extension, so same is the case about this Word doc. Usually the extension is doc file. Up to Word 2003, it was doc. Afterward 2003, I mean 2007 onwards, they changed to docx, docx. Okay, like for PowerPoint presentations, it was PPT. Still we call it PPT, but the extension is PPTX. Excel, XLS it was, now it is XLSX. Okay, so we'll save it by defaulting my documents above. We can choose the place. Okay, from the Explorer. Let me choose my documents. Okay, name is first file. Now this document gets saved. Okay, I can exit Word and come back here. Okay, there is the document. I will simply go in my documents. It will be there. Also, I will go in recent documents. If I open many documents, it will suggest me from the recent documents which was the latest on which I worked. You can also, besides save, I can also save as. There is an option save as. If I save it as, my original file, that's first file, will be there, and I'll be doing the editing on the new version, like first file 2. I have saved this file as first file 2. Now first file 2 is opened, first file is closed. That is the original copy that is there. You can edit first file 2. Okay, save as and save. In this office ribbon you can find many other commands, like you want to print this document. You can use what? P, Control P, or click here on this icon, or use Control P for printing. Okay, for the printer, I don't have any printer installed on my machine. It suggests Microsoft Print to PDF. Okay, otherwise it suggests some printer. I don't have any printer. It will simply print the file to a PDF file. Save the file as PDF file. Okay. There are many other options while printing a document, like all page, current page, some selection page, and all that. Now, cut, copy, paste. Beside Control C, Control V, and Control X, I mean copy, paste, and cut, we have some formatting here. In which section? Font section. This was what? Clipboard section. Cut, copy, and paste. Among this clipboard section, let's check and see what happens if I cut it. Control X, Control C. Okay, I'm doing a Control V. Now I choose this section, this part. Control C or Control C again, copy,
and I paste it here. Please observe. Now I choose this part, Control C, and I paste it here. Control V. Now I go in this section, clipboard. Okay. What does it say? Now check. This one. अभी आपने ऑब्जर्व किया जितना भी हम क्लिप बोर्ड मेमोरी एरिया में ये टेक्स्ट सेंड करें जैसे कॉपी यू कट कमांड से वो हमारे क्लिप बोर्ड एरिया में चलाते हैं। ठीक, अब हमारा क्लिप बोर्ड एरिया इज विजिबल नाउ। सपोज मुझे ये वाला पार्ट पेस्ट करना है। मैंने बहुत सी कमांड्स एग्जीक्यूट की, 4 कमांड्स मैंने एग्जीक्यूट की है कॉपी पेस्ट वाली। उनमें से ये वाली जो मेरा टेक्स्ट है आई वांट पेस्ट इट हियर। I'll click on it and just paste it. Now check. अब मैंने ये वाला पोर्शन सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी, ये आ गया ऊपर, रीसेंट है बिकॉज दिस इज द रीसेंट। अब मैं ये वाला नहीं, मुझे ये वाला पोर्शन जो मैंने किया था आई वांट इट हियर, I'll click here. So try it, it's good. Clipboard. One more thing in this clipboard is you want what? ये हमारा जो ये वाला फॉर्मेट है, फॉर्मेट नॉट टेक्स्ट। समटाइम्स यू वांट ओनली कॉपी द फॉर्मेट, you want to copy what format only. For example, I get some formatting here. I'm making it 28, okay, too much, 24, okay. Now what I want this format, let's reduce it to 20. I want this format to be copied, not text, only format. I want to apply that format here. What should I do? Should I repeat these steps of formatting, or should I use something simple here and copy formatting from one place and apply to another? Okay, I'll click it here. I'll click it here. It is the format painter. Now I want this format here. Oops. Ooh. Yeah, it worked. तो अभी क्या हुआ है, ये फॉर्मेट यहाँ पर पेस्ट हुआ, टेक्स्ट नहीं, फॉर्मेट ओनली. So sometimes you want to copy paste the format, you can use format painter. Try it. Okay, if you want to increase or decrease the font size of the selected text, you can use Control and a bright bracket on your text on your keyboard. Right bracket, square right bracket, left bracket, right bracket, left bracket for minimizing, right bracket for increasing the font size. You can do it from here as well. Control Shift P भी काम करेगा, या Control plus bracket, square bracket. Okay, reduce the font, increase the font. Which font type? Font size only. Okay. You can do it like from here. Control plus bracket. Okay. या वो दूसरा बहुत से शी कॉर्ड्स है. Okay. Now see, you can do it from here as well. You can do it from here as well. अभी के लिए if you want to clear the formatting, कभी क्या होता है, you get some text from internet, गूगल सर्च किया, कुछ टेक्स्ट आया, लेकिन आप क्या देखते हो कि उसमें जो फॉर्मेटिंग है, you don't want that formatting. So you select the text, and clear, and click on clear formatting. The formatting is cleared, it is in the default format.
What is the default format for this page? That is Calibri 11. Okay. So if you want your page to start with some Times New Roman or some other, you will have to go in the page settings and do it. Let's check it. We'll check it later. Okay. Now check this one. Bold, Control B, Control I italic, Control U italic, underline. Let us apply it here. B is bold, Control I is italic, Control U is underline. Strike through. That is it. This I don't know what. This is superscript and subscript. Like in equation Xcal. Okay. Uppercase and lowercase. Uppercase, lowercase, capitalize each word. Let's remove this strike from here. Let's remove this underline as well. Now uppercase, lowercase, toggle case. What does it mean? Toggle case is if the case is capital, it will toggle to small and vice versa. Capitalize each word. Lowercase, sentence case, and so on. Okay, but if you want, we'll select this. Okay. Okay, this one is good. For text, background text in foreground and background. I want it. Background I want. Okay, this is good. Now play with it to learn. One more thing. Now, if you want to align the text to left, you use Control L. If you want to align the selected text to right, you use Control R. Notice here it got selected. If you want to Control E. If you want to center the text, Control E. If you want to justify, then this Control J. What Control J does? It aligns text to both the left and right margins, adding extra space between words as necessary. What does it create? It creates a clean look along the left and the right side of the page. Okay. So it is like this. I'm writing some text. Then I'm writing some text here. And I'm writing some text again here. Now, if I apply Control L, left justified. If I apply Control or right justified. If I apply Control E, right center justified. If I apply Control J, it is justified. We'll have some smooth text. Okay, let us try it on this because we have some meaningful text, somewhat meaningful. Control J, okay, and Control J. Now check the difference. This one is somewhat irregular. It is not justified. By selecting Control J, this is something regular, a smooth, even look on left side on both the margins. What about this? The flow of text. You do. This is the actual. Now see this text. If I zoom it a little from here,
This selected text has uneven margins, left and right side alignment. If I want to smoothen it, if I want to what have a regular clean look, which was okay of this text, then what I will do, I will justify it. Control J. Now it is. Okay. Control J. Let us do same for this one. Control J. This is justifiable. Now see, this has had what? It's got a even look. Okay. So try Control J. Now paragraphs, if you want line spacing, suppose 1 instead of 1.5, if you want 2, it depends. Okay, line spacing of 2. Okay, so you will have some add space before paragraph, remove space after paragraph. Sometimes you will use it. It depends what type of text you want. I think I have zoomed it a lot. इसको थोड़ा सा zoom out करते हैं. Okay, this is our, ये हमारा था. This one 82%. Okay, paragraphs. If you want to select whole paragraph, triple click. Okay. If you want to select a word, double click. Okay. Select a sentence. There is also some shortcut key. You please try it. Okay. Was this bulleted list? Suppose I want a bulleted insert bullets here and here and here and here. You can change the type of bullets to any shape. Any shape. Okay. You can have a numbered bullet as well. You can have character, small case, Roman, and etc. Bullet list. Okay. Now check one more thing. Suppose I'm not doing it. You want to undo something, you will use Control Z. Control Z for undo. You want to redo, you will use what? Control A. Yeah, that is redo. Check redo as well as undo results to have better experience of things. Okay. Now what do I want? I want this text here, not this one. Okay, this text, this one. I select it. This is the normal I want without any space. I'll use if I want heading, if I want piece style, heading 2, title, subtitle, emphasis. There are so many pre-styles that you can use, like this one, this one, this one, this one. These are inbuilt styles that you can use for formatting the headers, text headers.
heading lines, and so on. Check it. Sometimes this no spacing one is very handy. For example, I want this text without any spacings and you simply no spacing. Okay. Now, in this editing section, you have find. If you want to find some word, for example, I want to find quick. How many appearances of quick are in this document? I will use Control F to find. I can replace quick with some other word. If I find some, suppose I have typed quick 7 times but with wrong spelling, I can replace that with spelling with the correct spelling using what, find what, and replace, and so on, or some synonym also. Now here I don't want to replace, I want to simply find. I'm finding find one by one, entering find next, or I can do find. Okay, that is find next. Now Control F. What I want to replace this quick by, for example, QK. I can replace it by one, or to have better control and watch what is happening exactly, I will do it one by one. Replace. If I'm sure what is to be replaced, how many times my text is not going to create any mess, I'll simply click replace all. But please be careful when you use this replace all in your documents. Sometimes it can be very dangerous. For example, you are writing a thesis and you have some particular word, it is there 100 times, and you want that word to replace with some other word. But inadvertently, if you replace all, it can create mess. So you have to be careful while using this replace all, or sometimes it is suggested to use replace and use replace one by one. That means replace next. Okay. Now that is what your replace all, control Z, and what, redo, repeat, replace. Control Y is redo. Okay, repeat, replace. Okay, now see here, insert. What is in this insert tab? What you can do, you can insert a table. Among pages you can insert a cover page. This is my cover page. बाकी पेज ऐसे ही है, ये हमने कवर पेज ऊपर इंसर्ट किया, उसमें कुछ टेम्पलेट्स हैं. इस टेम्पलेट टेक्स्ट को मैं चेंज कर सकता हूँ, ईयर को मैं चेंज कर सकता हूँ, कुछ भी. ओके, डेट वगैरह जो भी होगा. यहाँ पर ब्रीफ एब्स्ट्रैक्ट जो भी मेरा अपना होगा, टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट, सब टाइटल. बेसिकली मेरा क्या होगा, ये एक कवर पेज बनेगा. ओके, लेट्स डू दिस. ये वाला कवर पेज कोई भी आप रख सकते हैं. Tables, you can insert tables. Very handy tool. For example, we have a page. यहाँ पर ओके, ये हमारा पेज है. यहाँ मुझे टेबल इंसर्ट करना है. I can simply start with this 3x3 table, for example. इंसर्ट हुआ अभी. इसमें I'll start writing tab control. To navigate between the cells, you use tab key on your keyboard like I am using. Okay, कुछ फॉर्मेटिंग करनी हो
ऐसे करेंगे सेल अलाइनमेंट फॉर एग्जांपल सेंटर। और भी अगर कुछ करना हो जैसे बॉन्ड वगैरह जो भी बढ़ाना है आपका, तो इनमें से here also you have what some built-in headers, some built-in table styles, sorry, you can use those table styles as well if you want. Okay, this one, if you want here you can increase the font as well. Okay, and you have table properties, you can check it, huh? Borders वगैरह। ये आप देखेंगे क्या क्या प्रॉपर्टी है। इंसर्ट टेबल, ओके, डिज़ाइन टैब। सो व्हाट, हाउ विल दिस डिज़ाइन टैब हेल्प? अभी जो मेरा ऑब्जेक्ट है जिससे मैं काम कर रहा हूँ दैट इज अ टेबल एंड आई कैन चूज द डिज़ाइंस अमंग दिस टेबल स्टाइल्स एंड अमंग बॉर्डर आई वांट व्हाट, ऑल बॉर्डर्स। सेल्स है बेसिकली, ज़्यादातर टेबल्स आपको यूज़ होंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पर नहीं होंगे, यहाँ पर भी अच्छा खासा हर एक जगह पावर पॉइंट में भी। तो सबसे बड़ी बात है कि जो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है प्लस एक्सेल हो, ओके, स्प्रेडशीट जिसको हम कहते हैं, फॉर न्यूमेरिकल डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है। और ये वर्ड, ये आपस में कंपैटिबल है बिकॉज ऑल these softwares are from what, are part of a family, part of a package called Microsoft Office, and आपस में कंपैटिबल है। जैसे आपने टेबल यहाँ से लिया, वर्ड से पेस्ट किया एक्सेल में, हैंडी होगा। एक्सेल में टेबल बनाया, डिपेंड ऑन व्हाट न्यूमेरिकल जो भी आपका डेटा था उस पर आपने टेबल में कन्वर्ट किया। बार चार्ट में, पाई चार्ट में कैसे करते हैं वो हमें एक्सेल में सीखना होगा। तो लास्ट में आप क्या करते हो कि एक्सेल से यहाँ गए, वहाँ से यहाँ पावर पॉइंट में डाल सकते हो। तो इट्स हैंडी, दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑल दिस सॉफ्टवेयर are part of a package Microsoft Office and are compatible with each other. So many times you'll have same shortcut keyboard keys as well. Okay, ये screens वगैरह, menu bars ये भी common मिलेंगे। Now थोड़ा आगे बढ़ते हुए, अगर आप चाहते हो पिक्चर इंसर्ट करनी है, simply you choose some picture, okay, and insert it here। इसलिए जो है वर्ड आप यूज़ करते हो ये तब जब आप ये यूज़ करोगे तब जाके ज़्यादा समझोगे। सो प्लीज़ ट्राई हैंड्स ऑन योर सेल्फ। ओके, इस पिक्चर को आप थोड़ा सा यहाँ पर भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, जो भी आपको फॉर्मेटिंग करनी है। इसका साइज पहले हम ऐसे यूज़ करते हैं। ओके, कभी कभी पिक्चर को अगर जो आपका टेबल है उसकी सेल्स में रखे, बहुत हैंडी रहता है, ट्राई करना। Start moving here or there to have a control on it. What you will do, you will right click text wrapping. You want text to wrap up in front of text, this image to wrap up in front of text, a thorough scale in line with text. Let's use this in front of text. What does it do? So now you can simply move it and you can write the text. Okay, in front of text you can write the text now. ओके, आप चाहे तो आप लिख सकते हो टेक्स्ट। इमेज है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट नाउ। इसमें और भी ऑप्शन है वो आप देखेंगे, ठीक है।
ओके, जैसे कि ये इमेज मैंने थोड़ा 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 यहाँ पर ले लिया, इसको अभी अब देखिए, you can see, okay, this is tight. So there are various options कि टेक्स्ट और इमेज को आपस में आप कैसे मतलब प्रेजेंट करें। ये ऑप्शन आप चेक करिएगा प्लीज। ओके, क्लिप आर्ट है, कुछ बनी बनाई क्लिप आर्ट इसमें माइक्रोसॉफ्ट में जो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, टेक सम टाइम। यहाँ पर आपको क्लिप आर्ट्स मिलेंगे। कलेक्शन से थोड़ा सा वो आप यूज कर सकते हो। इट इज टेकिंग सम टाइम, यू कैन चेक इट। Shapes है, if you want some shapes to insert, triangle, inbuilt shapes, flowchart shapes, जो भी आपको कभी कभी जिसकी ज़रूरत आपको पड़े वो आप कर सकते हैं। एंड चार्ट्स, जैसे मैंने कहा कि चार्ट्स भी आप कर सकते हो, बेटर होता है आपके पास कोई डेटा हो जिसका आप देखिए। अभी जब मैंने चार्ट इंसर्ट करने की कोशिश की, व्हाट हैपेंड, इसने एक्सेल शीट एक ओपन किया, एम्बेड किया। जब मैं अब यहाँ पर कुछ डेटा, डमी डेटा चेंज कर रहा हूँ, जैसे मैंने कैटेगरी 1 और सीरीज 1 में 1000 लिखा, यहाँ से चार्ट मेरा बन रहा है। ओके, इट्स एन एम्बेडेड डेटा, एग्जांपल ऑफ एन एम्बेडेड डेटा शीट। ये चार्ट्स वगैरह, ये न्यूमेरिकल डेटा प्रोसेसिंग हम इस सॉफ्टवेयर में करेंगे जिसका नाम है व्हाट, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। फिलहाल के लिए मैं बंद करता हूँ कि दिस इज योर चार्ट। सो वेरी हैंडी, एज आई सेड, यू कैन मूव दिस चार्ट टू एक्सेल और प्रेजेंट इन पावर पॉइंट। चार्ट्स में आपको बहुत से टाइप्स मिलेंगे, डिपेंड्स है किस टाइप का डेटा है और किस टाइप का, उसी टाइप का चार्ट आप बनाएंगे। नहीं, जैसे पाई चार्ट के लिए पाई चार्ट कहाँ पर रेलिवेंट है, बार चार्ट कहाँ पर रेलिवेंट है, रिसोर्स स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, कौन सा चार्ट कहाँ पर यूज करना है, ये नॉलेज अगर आपके पास हो, स्टैटिक्स पढ़ा हो थोड़ा सा, आप इजीली इन चार्ट्स पर फिर यू कैन टेक योर स्टैटिस्टिक्स कोर्स टू नेक्स्ट लेवल, डेटा एनालिसिस कोर्स टू नेक्स्ट लेवल। इसकी जो एक्सेल है ये यूज होता है कहाँ पर, न्यूमेरिकल डेटा प्रोसेसिंग एंड डेटा एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा, वो हम पढ़ेंगे, हम एक्सेल यूज करेंगे। नाउ चार्ट से बाहर आते हुए अभी हम देखेंगे पेज लेआउट। पेज लेआउट में आपका आता है मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स, वो सारा। जैसे कि सो कवर पेज, फॉरगेट इट, हियर आई वांट मार्जिन डिफॉल्ट है इस पेज के, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट ये वाला सेंटीमीटर की स्पेसिंग हो, जैसे आप टेम्पलेट में देख पाते हैं। ओके, डिफॉल्ट। तो ओरिएंटेशन, portrait is what default, and you can have also landscape orientation. So these are paper orientations। जैसे कि आपको टाइम टेबल बनाना अपने कॉलेज का, टाइम टेबल फिट होगा अगर आपके डॉक्यूमेंट की जो आप लिखना चाहते हैं उसकी वेट ज़्यादा है बट उसकी लेंथ के, तब आप लैंडस्केप वाला चूज़ करेंगे, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट ही होता है। ओके, columns, ये भी बहुत हैंडी है। सपोज यू हैव टू प्रिपेयर व्हाट brochure of an event, so you want, you'll use some style जो भी वोग में है, जैसे 2 कॉलम। अब देखिए जितना भी आपका टेक्स्ट है वो 2 कॉलम्स में एडजस्ट हो,
फिर आप चाहते हैं 3 कॉलम्स में सेम टेक्स्ट है, यू कैन जस्ट इन 3 कॉलम्स ऐसे। तो इसी को थोड़ा सा फॉर्मेट करके आप एक ब्रोशर बना सकते हैं। वर्ड में कुछ भी पॉसिबल है, आप बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। वर्ड इज अ वेरी पावरफुल सॉफ्टवेयर पैकेज। नाउ watermark, let me choose some watermark here, this one। अब जहाँ पर ये मेरे पेज है उनमें लिखा आता है कॉन्फिडेंशियल बैकग्राउंड में, so watermark, do not copy extra। you want page borders, देखिए जी मैं कोई सेक्शन ना कोई ऑप्शन छोड़ भी रहा हूँ, हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो भी यूजफुल ऑप्शन है वो मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ। एक है पेज बॉर्डर, ये वाला बॉर्डर मैंने रखा, ठीक है। और अभी के लिए पेज कलर, डिफॉल्ट तो कोई कलर है ही नहीं, यू वांट दिस वन, आपका जो पेज का कलर है वो ऐसे आ गया, ठीक है, ओके। दिस इज द इंडेंटेशन लेफ्ट राइट, कितना स्पेसिंग होगा, स्पेसिंग आफ्टर बिफोर। रेफरेंसेस यूज होता है इसमें अगर आपको सपोज थीसिस बनानी है, कोई बुक लिखनी है वर्ड में, उसमें आपको ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। अगर आप थोड़ा सा एक डॉक्यूमेंट लिखना चाहते हो 2-3 पेज का, उसमें इसका ज़्यादा रोल नहीं होगा। हाँ, व्हाट अबाउट दिस वन, मेलिंग्स, दिस इज ऑल्सो गुड। मेल मर्ज जिसे हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट, मेल मर्ज। क्लोज दिस व्यू फॉर मेल मर्ज। अभी ये कहाँ पर काम होगा, ओके ये काम आएगा मेल मर्ज आपका अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, कोई लेटर, you have a letter and you want it देखिए जो कॉन्फिडेंशियल बैकग्राउंड में आता है, दिस इज बिकॉज ऑफ दैट हमने क्या किया था, पेज लेआउट में हमने वाटरमार्क अप्लाई किया। ये अभी हम रिमूव कर रहे हैं तो हट जाएगा। और ये पेज कलर, आई डोंट नीड नो कलर, पेज बॉर्डर लेट इट बी देयर। तो क्या कह रहे हैं, कंट्रोल एल, ओके। आई नो कोई नया पेज होना चाहिए यार, ओके दिस इज इट। मेल मर्ज में आप क्या करेंगे, मेल मर्ज कहाँ पर यूज होगा, एक अच्छी सी एग्जांपल है, आपके पास एक कार्ड है, इनविटेशन कार्ड। अब ये इनविटेशन कार्ड आपको भेजना है टू 100 people, you want to send this invitation card to 200 recipients। now one thing of doing it is you type the invitation card, do the formatting, whatever you have to do, and one by one make 100 copies of the same, or copy paste it 100 times and type in the names of the recipients. That is one. Okay. In that case, if you have a change in formatting, which you notice later on, you have to change all the 100 pages. दूसरा है, अगर आप हैंडल थोड़ा आसान तरीका करना चाहते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ कितने भी रेसिपिएंट्स हो, आप क्या करते हो, आपके पास एक लिस्ट होगी, एक टेबल होगा, रोज और कॉलम होंगे, सपोज रेसिपिएंट नेम जो भी होगा उसका लिस्ट ऑफ रेसिपिएंट्स जो है दैट है यू हैव इन एक्सेल फाइल में है, ठीक, एक लिस्ट। वो लिस्ट आप क्या करना चाहोगे, जो आपका ये मेल है,
इसके साथ वो लिस्ट आप मर्ज करेंगे using the technique called mail merge. So you write the letter once, you merge it with your list. Suppose if your list contains 100 records, 100 pages will be formatted, automatically formed. My word. So for that we'll have to use the technique called what? Mail merge. कैसे होता है? Let us check. मेलिंग्स पर गए, ओके, एनवलप जो भी आपको क्रिएट करना है, एनवलप, ओके, लेट्स डू वन थिंग, स्टार्ट मेल मर्ज, कौन सा? लेटर्स, ओके, लेट मी राइट समथिंग हियर, एक कॉलम्स वाला भी हम हटा रहे हैं, पेज लेआउट में हमने किया था कॉलम्स दो, हम एक ही रखेंगे, थोड़ा सा इसको जूम कर लेंगे, यहाँ पे जूम से आपके प्रिंटर पर प्रिंट आउट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपको मतलब व्यू है, सोने व्यू, ओके, नाउ दिस इज माय लेटर, I want to insert here some greetings or greeting or recipient address and my name also. Now I'll go again, mailings, start mail merge, choose what letters, so हमने choose किया, select recipients, type new list, choose existing list. अगर आप वर्ड में ही लिस्ट टाइप करना चाहेंगे तो आप टाइप न्यू लिस्ट करेंगे, यूजुअली मेल मर्ज आप तब यूज़ करोगे सपोज या 40-50 लिस्ट बड़ा है लिस्ट, तो रिकमेंडेशन है, रिकमेंडेड है, आई सजेस्ट यू यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट। वो एग्जिस्टिंग लिस्ट आप कहाँ से लेंगे? एक्सेल में बनाएंगे, वो एक्सेल फाइल यहाँ पर लिंक करवाएंगे। लेट्स डू समथिंग लाइक दैट, एक्सेल में जाए, लेट्स गो इन एक्सेल, अगेन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 ऐप, एंड यहाँ पर मैं अभी नेम एंड एड्रेस, कुछ भी हो सकता है, नेम सपोज नेम 1 AHM RAB CAA TOO, address A1 A2 A3 and A4. I have a list of 4 recipients. I will save this, name it REC recipients. Okay, close this Excel file. Now I'll go here, I'll use what? Select recipients, use existing list, I'll go in desktop, मेरा लिस्ट कहाँ पर है, मैंने शायद डॉक्यूमेंट्स में चेंज किया, ओके दिस इज इट, recipients, ओपन, नाउ दिस इज माय शीट 1, इसमें खाली शीट 1 ही है, ये मेरा है, दिस इज माय, ओके। ना उसके बाद एडिट तो नहीं करना है, एड्रेस ब्लॉक, लेट दिस बी एड्रेस ब्लॉक हियर, ये आप रहने दीजिए, ग्रीटिंग लाइन, ठीक है, कहाँ से लानी है ग्रीटिंग लाइन, या आप कर सकते हैं, या सिंपली जो आपका अपना मर्ज फील्ड है, आपके मर्ज फील्ड में अभी है नेम एंड एड्रेस, इफ यू रिमेंबर जो हमारी एक्सेल फाइल है उसमें 2 फील्ड्स है, 2 कॉलम्स, नेम एंड एड्रेस, आई विल इंसर्ट नेम हियर and address I will insert here, okay, ठीक है, ओके,
इसको थोड़ा जस्टिफाई करेंगे। ओके, नाउ बाकी जितना भी मेरा यहाँ पर टेक्स्ट था, ओ बहुत कुछ है यहाँ पर, लॉट ऑफ टेक्स्ट देयर, सेलेक्ट इट। कितने पेज है भाई, बहुत सारे। आई थिंक अप टू हियर, कहाँ तक। चले रहने दीजिए, लेकिन आपके इसमें आप क्या करेंगे, जब आप मेल मर्ज की एग्जाम्पल करेंगे, आप एक ब्लैंक पेज लेंगे, वहाँ पर ये आपका पेज होगा। ओके, एक ही पेज होगा। ओके, do one thing, let us do it quickly. New blank document, put some random text, insert your text. I'm putting some random here, insert some random. Now here I'll use mail merge. I'll go in mailings, start mail merge, letter format, select recipient, use existing list, go in documents जहाँ पर मैंने अपनी फाइल सेव की है, recipients, okay, file is in use, okay. So to do, we'll do one thing, we'll close this document. No. Now select recipients, use existing list, documents, ये वाली फाइल है, okay. Now go here, insert merge field, name, insert merge field, which one? Want insert address. ये आपका एक पेज है, लेकिन हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स है उस फाइल में? 4 रिकॉर्ड्स है, we have 4 records. Now once I do the mail merge, complete the mail merge process, वर्ड में ऑटोमेटिकली 4 पेज बनेंगे। अगर उस फाइल में 100 रिकॉर्ड्स होते तो 100 फाइल्स बनते, इसमें 4 ही है तो 4 पेज बनेंगे। तो प्रीव्यू रिजल्ट्स, यू कैन प्रीव्यू द रिजल्ट्स लाइक दिस। ये वाला आपका एक है, record 1, this is your record 2, this is your record 3, this is your record 4, all well. Now I'll finish the mail merge. Edit individual documents, I'll click on it, or I will simply click on print documents. प्रिंटर पर 4 के 4 पेज प्रिंट होंगे, तब कि हमने टाइप एक ही पेज किया था। एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, मर्ज रिकॉर्ड्स, यस ऑल, या पर्टिकुलर कोई, सपोज आप चाहते हो खाली रिकॉर्ड नंबर 3 और 6 और रो नंबर जो हमारा रिकॉर्ड से 4 है, 4 में से लास्ट 2 हो या 1 हो गया हो, ऐसा भी आप कर सकते। अभी के लिए हमें सारे मर्ज करने हैं। ये बन गया आपका मर्ज मेल डॉक्यूमेंट। कितने पेज है इसमें? 4 पेज। देयर आर हाउ मेनी पेज? 4 पेज। दिस इज द नेम ऑफ फर्स्ट रिसिपिएंट, दिस इज द एड्रेस एंड दिस इज द लेटर। ये तो कॉमन थी, लेटर हमारा कॉमन था, बाकी ऊपर recipient address and name of different 2, page 3 and page 4. This is the logic of what? Mail merge. अब रिमेंबर, आपको एक असाइनमेंट करना होगा। इसकी डेट अभी तो नहीं है, अनाउंस की जाएगी, लेकिन कीप इट इन माइंड, यू विल हैव टू फॉर्म आई कार्ड यूजिंग मेल मर्ज। स्टूडेंट आई कार्ड आपने सपोज डिज़ाइन बना लिया एक पेज में, अब फॉर्मेट तो सेम है, बाकी चीज़ें जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट, रोल नंबर वगैरह वगैरह वो डिफरेंट है। तो मेल मर्ज के थ्रू आप आई कार्ड्स बनाएंगे, यहाँ पे याद रखना। ठीक है, मैं बताऊँगा कब ये असाइनमेंट सबमिट करनी होगी। ठीक है, आज के लिए काफ़ी है वर्ड में। नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे ऑफलाइन क्लास में भी डेमोन्स्ट्रेशन देने की, कि जो आपका कोर्स है इसमें वर्ड, एक्सेल और पावरपॉइंट के अलावा आपको तो सारा डेटाबेस भी पढ़ना होगा। डेटाबेसेस आई थिंक
आप में से नहीं पढ़ा होगा, लेकिन पावर पॉइंट मोस्ट ऑफ यू बी नोइंग एंड यूजिंग इट. एक्सेल, आई होप एट लीस्ट सम ऑफ यू आर यूजिंग एक्सेल. सो एक्स पावर पॉइंट तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, वो आप कर पाएंगे. उसका मटेरियल मिलेगा, कैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है वो थोड़ा सा डेमो दिया जाएगा. और बाकी आप खुद ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनती है, गुड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनती है, क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए, वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल नॉलेज आप गेन करेंगे. और फाइनली प्रैक्टिकली आप डेमोन्स्ट्रेट करेंगे. एक असाइनमेंट होगा आपका पावर पॉइंट में, टॉपिक आपका होगा, किसी भी टॉपिक पर आप एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाएंगे. हाँ, टॉपिक ऑफ योर चॉइस. जो डेटाबेस है, डेटाबेसेस फुल फ्लैश्ड आपको सपोर्ट मिलेगा अंडर टीचिंग डेटाबेस सिस्टम्स. ठीक है, जब भी हम ये पार्ट्स पहला वाला पोर्शन खत्म करते हैं. फिलहाल के लिए बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, सलाम.